स्टूडेंट सो माइक्रोकंट्रोलर ਦੇ ਵਿੱਚ जो डिस्कस करांगे वो हैगा पिन डिस्क्रिप्शन ऑफ 8051 सो माइक्रोकंट्रोलर ਦੀ पिन ਬਾਰੇ डिस्कस करांगे सो 8051 ਮਾਈਕਰੋਕੰਟਰੋਲਰ इज अ 40 पिन IC सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਪਿਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ सो 1 by 1 पिनस बारे डिस्कस करांगे it is a 40 pin device but out of these 40 pin 32 are used for input output सो फस्ट वन इज 40 पिनस जो होंदियां लैफ्ट हैंड साइड ਦੇ ਵਿੱਚ जो ਮਾਈਕਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਆ ਫਸਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਜੋ ਪਿਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਮਾਈਕਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਂਡ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40 ਤੱਕ ਜੋ ਪਿਨਸ ਨੇ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ 8051 ਮਾਈਕਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਪਿਨ ਨੰਬਰ 1 ਸੋ ਪਿਨ ਨੰਬਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਨ ਨੰਬਰ 8 ਤੱਕ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਪੋਰਟ 1 सो पिन 1 तो लैके पिन 8 तक जो होया है पिन 1 तो लैके पिन 8 तक पोर्ट 1 अपने को अवेलेबल होंगे सो द पोर्ट 1 इज अ जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पोर्ट विच कैन बी यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ इंटरफेसिंग टास्क ईच ऑफ दिस पिन कैन बी कन्फिगर हैज इनपुट और आउटपुट सो ये जो आप 1 रिटर्न करांगे सो दिस कैन बी यूज हैज अ इनपुट जे एक्ट हैज अ आउटपुट लेना तो 0 अपन रिटर्न करना पैना सो इनपुट आउटपुट पर्पस लिए यूज करते हैं पोर्ट 1 सो नैक्सट आ जाती है पिन नंबर 9 सो पिन 9 इज अ रीसैट पिन सो अ पॉजिटिव वोल्टेज पल्स ऑन दिस पिन रीसेट द माइक्रोकंट्रोलर और स्टॉप द माइक्रोकंट्रोलर ऑपरेशन so generally it erases the all contents of most register pin number 19 reset pin so applying logical 0 to this pin the program start execution from the beginning so ये function ਹੁੰਦਾ pin number 9 ਦਾ next one is pin number 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ pin number 17 ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ port 3 ਦੀ pin so port 3 ਜੋ 3 ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पिन 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ पिन 70 ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ so port 3 is a dual purpose port act has a normal input output port but it has additional function so ਜਿਵੇਂ port 10 ਆ so port 3.0 ਆ ਇਹਦਾ function ਕੀ ਹੈ port 3.0 is a RxD serial asynchronous communication input or serial synchronous communication output so next is port 3.1 pin number 11 so it is a TXT serial asynchronous communication output or serial synchronous communication clock output so pin number 12 and pin number 13 जो pin number 12 ਤੇ pin number 13 है वो यूज करते हैं एज अ इंटरप्ट पर्पसली एक्सटर्नल इंटरप्ट pin number 12 is a external interrupt 0 and pin number 13 is a external interrupt 1 so next is pin number 14 and pin number 15 port 3.4 and 3.5 यूज करते हैं टाइमर काउंटर पर्पसली so pin number 14 is a timer counter 0 external input and pin number 15 is a timer 1 external input so next is pin number 16 and pin number 17 port 3.6 and 3.7 so pin number 16 is used for the write signal to external RAM data memory purposely use करते हैं and pin number 17 port 3.7 used for the reading from the external RAM data memory so ये सीगा port 3 so next pin number 18 and pin number 19 this pin 8051 on chip oscillator is driven usually from external crystal फिर which quad crystal जेड़ा कि use करते हैं for input and output pin of internal oscillator so next is pin number 20 so जो pin number 20 है वो यूज करते हैं एज अ ग्राउंड पर्पसली so this pin is grounded so next pin आ जाती है pin number 21 and pin number 28 so pin 21 तो लैके जो pin 28 है वो है port 2 ਦੀ pins so ਜਿਹੜੇ port 2 ਹੁੰਦੇ ਆ is a dual purpose port it can be used as a general purpose 8-bit port when no external memory is present but if external memory access is required then port 2 will act as a address bus in conjunction with port 0 to access external memory so ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ address ਜੋ ਹੈ
ਇਹ ਐਡਰੈਸ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡਰੈਸ 15 ਤੱਕ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੋਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਜ਼, ਸੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਿਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਡਰੈਸ ਔਰ ਡਾਟਾ ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਡਰੈਸ 60 ਬਿਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰ ਡਾਟਾ ਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ 8 ਬਿਟ ਦੇ। ਸੋ ਪੋਰਟ 2 ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਉਹ 21 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਤੱਕ ਪਿੰਸ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ pin number 29. So pin 29 is a PSE pin. PSE means program select enable. Pin number 29 is a program select enable pin. So it is an external memory. It is required to provide logic 0 on both PSE pin and EA pins. So they ਇਹ pin ਹੈ provide ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ for the output read stroke to external program memory ਲਈ। So next is pin number 30. So pin 30 is a ALE pin or PROG. So ALE is a stand for address latch enable, pin 30 address latch enable, and PROG is program pulse. So this pin is when multiple memory chips are connected to the controller and only one of them needs to be selected. So ALE pin signal has an output pulse used to latch the low byte of an address A0 to A7 during the access to external memory. So ALE pin यूज की जाती है जो एड्रैस के डाटा ਨੂੰ ਡੀਮਲਟੀਪਲੈਕਸ करना ਹੋਵੇ ਤਾਂ भी ALE पिन एड्रैस लैच इनेबल पिन ਅਸੀਂ यूज करते हैं। सो ये है पिन नंबर 30। सो नेक्स्ट इज पिन नंबर 31। सो पिन नंबर 31 इज a EA or VPP. So EA is external access and VPP is programmable voltage. So this pin is either tied high or low according to circuit requirements. So जो enable pin है वो high CPU execute करने यूज करते हैं जो internal program memory अपन यूज करते हैं। So next is pin number 32. So pin 32 तो लेके pin number 32 तो लेके pin number 39 तक जो यूज करते हैं वो है पोर्ट 0। सो पोर्ट 0 जो यूज होंगे वो पिन नंबर 39 तो लेके 32 तो लेके 39 तक यूज होंगे। सो पोर्ट 0 इज अ ड्यूल पर्पस पोर्ट, कैन बी यूज एज अ जनरल पर्पस 8-bit port when no external memory is present. But if external memory access is required, then port 0 act as a multiplex address and data, but that can be used to access external memory with port 2. So port 0 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਤੇ ਐਡਰੈਸ ਦੋਨੋਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੋ ਡਾਟਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ D7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਸੋ ਡਾਟਾ D0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ D7 ਤੱਕ ਡਾਟਾ 8-bit ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਐਡਰੈਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 8-bit ਦੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਪਿਨ ਇਜ਼ ਪਿਨ ਨੰਬਰ 40। ਸੋ ਪਿਨ 40 ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲਰ ਜਿਹੜੀ ਪਿਨ 40 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ VCC ਪਿਨ। ਸੋ 8051 ਮਾਈਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੀਡ 5 वोल्टेज टू फंक्शन प्रॉपरली। सो पिन नंबर 40 जो यूज करते हो VCC पिन परपसली यूज करते हैं। सो ये सीगे 40 पिन्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर। नेक्स्ट इज पोर्ट ऑफ 8051। सो 8051 हैज 4 ports. So port 0, port 1, port 2 and port 3. So port 0 is a dual purpose port. It is located from pin 32 to लेके pin 39 तक 8 pins. To use this port as both input output port, each pin must be connected externally to 10 kilo ohm pull up resistor. This is because port 0 is an open drain. So next is port 1 is dedicated input output port from pin 1 to pin 8. Upon reset, it is configured as output port. So it is generally used for interfacing to external device. If you need to connect to switches or LED, you could make use of these 8 pin, but it does not need any pull-up resistor as it is having internal. So like port 0, port 2 is a dual purpose port, pin 21 through 28. So next is port 3. Port 3 is also a dual purpose, but designer generally avoid
using this port unnecessarily for input output because the pin have alternate function which are related to special features of 8051. So however, for the programmer it is the same to program port 0, port 1, port 2 and port 3. So all the ports upon reset are configured as output. So to use any of the ports input port, it must be set program. So this is a function of port 3. So जो discuss किया सीगा 1 by 1 port 3 बारे. So port 3.0 is a receive data for serial port and port 3.1 TXT is a transmit data for serial port. Then port 3.2 is an external interrupt 0 and port 3.3 is an external interrupt 1. So नाल ये bit address भी show किते हुए ने. So port 3.4 is a timer counter 0 external input and 3.5 is a timer counter 1 external input. Port 3.6 external data memory write strobe and port 3.7 is a external data memory read strobe. So ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ bit address ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ available ਆ port 3 ਦੇ. So ਇਹ ਸੀਗੇ 40 pins of microcontroller 805.